Hello everyone, I am Dr. Billy from Erudite Chemistry classes and today we are going to discuss mechanism of esterification. So let us first understand कि mechanism से पहले हम लोग एक बार देख लें कि esterification क्या होता है. Esterification, as the name is indicating, formation of ester is called esterification. So कैसे बनता है? Acid, carboxylic acid react with alcohol to form ester. The general formula of ester is RCOOR dash. And here you can see this R and this R. I have used the different symbol for R and R. The reason is simple that R may or may not be same. मतलब ये R कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है CH3 हो, तो ये R हो सकता है कि C2H5 C3H7 कुछ और हो. So just because we may or may not be similar, we are using the different symbol for them. So this is R and ROH, यानी alcohol and acid react in the presence of concentrated H2SO4 to form ester. This reaction, as you can see here, I have used the symbol for the reversible reaction ना. तो क्या मतलब है इसका? This reaction is reversible in nature. अब अगर ये reversible है तो we need to take care of that ये reaction back side में ना जाए. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? We are using this concentrated H2SO4. So basically this reaction is taking place in the presence of concentrated H2SO4. What is the role of concentrated H2SO4? The first role is it is going to work as a catalyst for the reaction. As well, it is going to act as a dehydrating agent for the reaction. क्या करेगा? Dehydrating reaction. तो क्या करेगा? ये कैटलिस्ट का भी काम करेगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करेगा. कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को इनिशिएट कराना और फिर लास्ट में वैसे की वैसे मिल जाना. डिहाइड्रेटिंग एजेंट वी नो दैट कि ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि अगर ये रिएक्शन में वाटर या एस्टर कुछ भी रहता है, मीन्स दिस इज गोइंग टू गो टू द बैकवर्ड साइड, बट वी डोंट वांट दिस रिएक्शन टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो क्या करें? इसका एक प्रोडक्ट रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो हमने क्या किया? वी आर यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट सो दैट दिस वाटर विल बी रिमूव्ड एंड दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड टू द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये रिएक्शन इज अ reversible reaction and this dehydrating agent is going to remove this water content. Now let us understand ये होता कैसे है. देख ले कैसे होता है. So the first step is protonation of carboxylic acid. So let's start. First step is protonation of carboxylic acid. Here is carboxylic acid RCOOH. Okay, this oxygen is having lone pair of electrons, two lone pair of electron, and this is going to be protonated. This is H plus ion coming from where? Concentrated H2SO4 दे रहा होगा because it is catalyst here. So this is going to get protonated. So what is the process of protonation? This lone pair of electron is going to have this H plus ion and going to connect it in this way RCO the lone pair of electron. ठीक है, and here it is connected with H, and just because this oxygen is now connected with 3 bonds, now the charge appears on it positive and rest of the things will remain same. So what is this species form? This species is called protonated carboxylic acid. Okay, so once it is protonated, the second step, let us see कि क्या होगा. In this protonated carboxylic acid, what will happen? Because this oxygen gets unsatisfied, ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड पेयर लेके अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा. So this is going to take its bond pair and convert it into the lone pair. As this bond pair will be pulled toward the oxygen, क्या होगा? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लैकिंग हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. When this oxygen is going to take this bond pair of electron towards itself to make it self satisfied, ये कार्बन की हेल्प कौन करने वाला है? ROH. कैसे करेगा? Let us see. So the second step is nucleophilic attack of alcohol. So now you can see here I have drawn the structure after the shifting of this. When it is shifted here, there will be positive charge appear on the carbon. If there is a charge on the carbon, this oxygen which is having electron pair, this is going to help this
carbon. So this is what happening here, that is the nucleophilic attack of alcohol on protonated carbon. So protonated carboxylic acid. So let's see what happens after this. RCO with 2 electron, lone pair of electron, this, and then what? OH, and this OH I am writing down at the downside, and this OV I will connect from this side, on the right hand side, just because I wanted to give it a sequence only to the molecule. That's the reason only. तो ये OH मैं नीचे बना रही हूँ, ठीक है? So this is OH, okay, and this O is connected with this carbon. Let's see, O connected with this carbon directly, and one side there is R dash, another side there is H. One lone pair left out on this oxygen, another lone pair is bonded with the carbon. तो ये lone pair हो गया bond pair, और जो आपका ये carbon था, this is now satisfied. But just because this oxygen is now connected with the 3, तो क्या होगा अब इसके पास? इसके पास आ गया plus charge. Now just because this oxygen is getting positive charge here, now what will happen? This hydrogen is going to transfer to this OH. Going to transfer to this OH, so that this OH will convert into OH2 and will be removed as H2O. So the next step will be, let me write down this next step. The third step and the next step is transfer of this proton to this side and the removal of this water molecule from this carbon. So let us see what is going on. Transfer of proton and removal of water. So transfer of proton and removal of water. Let's see कैसे हो रहा है, देखिए. Okay, so I am just transferring it to this side. इसे transfer करूँ तो what will happen? OH2 will be formed. This OH is already very happy. This O is now again happy because this hydrogen is removed from here. As you can see, water is formed. This water will be removed, and when this water will be removed, what will happen? This water, after the removal of this water, again the problem begins, that is RCOH O and R. Okay, when this water will be removed, this carbon will again get positive charge. जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगेन दिस कार्बन इज इन ट्रबल, तो दिस ऑक्सीजन हैज टू हेल्प दिस कार्बन बाय शिफ्टिंग इट्स लोन पेयर टुवर्ड्स द कार्बन. सो लेट्स सी क्या होगा इसके बाद. RCO with the one lone pair, positive charge appears on this because it is going to connect with the double bond, and then what? OH and then O double bond. Two lone pairs with R dash. ये सब R dash है, ठीक है. So this way again this carbon is happy, but oxygen is again in the same problem. So the substance formed here, as you can see here, this substance which is formed here, this species which is formed here is protonated ester. Now in the next step, this ester is going to remove this H plus ion, and this will convert into ester. H plus ion, it was a catalyst, so it has to be removed because it has to be separated at the end of the reaction. So ultimately what we will be getting? RCOO R dash. As you can see here, this is formed here. Our ester is completely formed. So let us see what is happening again. The first step is protonation of carboxylic acid. यानी पहले स्टेप में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन हुआ. व्हाट इज फाउंड? प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से ऑक्सीजन विल एक्वायर 3 बॉन्ड्स. अब 3 बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया. जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड पेयर will be converted into lone pair. When it will convert into lone pair, this carbon will be lacking species. So who will help this carbon? This another species formed. What is that? Alcohol. Alcohol का O इसको help करेगा. So the next step will be the nucleophilic attack of the alcohol. Now what is going to happen? This H proton is going to transfer to this side. अपना ये electron देके, how it is going to get transferred?
अपना इलेक्ट्रॉन ये देगा इसको, यानी कि बॉन्ड पेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर एंड देन इट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड। जैसे ही ये इधर आएगा ऑब्वियसली दिस बिकम OH2O हैवी स्पीशीज, और जैसे ही ये हैवी स्पीशीज आएगी, हैवी स्पीशीज OH2 विल बी रिमूव्ड एंड इसका चार्ज विल अपीयर ऑन कार्बन। जैसे ही कार्बन पे चार्ज आया, अगेन दिस कार्बन इज इन ट्रबल। जब कार्बन ट्रबल में आया तो दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू हेल्प इट आउट। कैसे? बाय कन्वर्टिंग इट्स लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर। वापस इसने अपना ट्रांसफर किया। जैसे ही इसने ट्रांसफर किया, अगेन दिस इज स्टार्टिंग मेकिंग द 3 बॉन्ड्स। जैसे इसने 3 बॉन्ड बनाए, नाउ it is again getting the positive charge. Once it is getting the positive charge, again it is in trouble. तो क्या करेगा ये? It is going to lose its proton. Cluster is formed. ठीक है? One thing I want to make you clear here that as you can see in this particular state, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी. Can you see here? This is ROH, है ना? ये ROH है. क्या निकल रहा है इसमें से? H, यानी अल्कोहल का क्या निकलता है यहाँ पे? H. ये क्या है? RCOOH. Can you understand this? RCOOH पे प्रोटॉन लगा हुआ है ना, तो what is happening here? RCOOH में से what is removed? OH is removed. So this is a special case where acid and alcohol में से क्या हो रहा है यहाँ पे? Acid का तो OH is removed and alcohol का H is removed. I hope this video will be helpful for you and you can now understand what is the mechanism of esterification. But one thing you just remember that it is not sufficient to see the videos. You have to just keep your copy and pen with you. और फिर जैसे जैसे मैं करती जाती हूँ, आप लोग भी उसको नोट डाउन करते जाइएगा. The general mistake which most of the students do is कि ये लोन पेयर बनाते समय you forget कि कितने लोन पेयर बनाने हैं. जब भी आप एक लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में या बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट करते हैं, एक ध्यान रखिएगा, जैसे here I have made 2 लोन पेयर. And now just because this lone pair this is connected with this, तो एक लोन पेयर इन दोनों के बीच में आ गया, तो लोन पेयर बन गया बॉन्ड पेयर. अब जैसे ही ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे आएगा, दिस इज गोइंग टू गेट अगेन 2 लोन पेयर. तो लोन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है और बॉन्ड पेयर हमेशा लोन पेयर में कन्वर्ट होता है. 2 के बीच में आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, सेपरेटली एक पर रहेगा तो लोन पेयर बन जाएगा. इज इट ओके? सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.